Assalamualaikum everyone. In this video, we'll see how to merge and join files on Stata. For that, we need to have data sets. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे डेटा सेट्स मौजूद हैं. So, number one, हमारे पास एक डेटा मौजूद है, data one merge. So, we'll open that file over here, as you could see. This is the file. We have three variables, make, price, and MPG. So, we have make variables, price variable, and MPG variables. So we wanted to merge this into another file. For that, we need to have another data set. Here we have another data set that we wanted to merge. This is the data set data to merge. हम इसको click करेंगे. This is another data set. Here, as you could see, here we have make variable, weight variable, and length variable. यहाँ पे हमारे पास length और weight variable बिल है जो कि हमारे पास पिछले वाले डेटा सेट में मौजूद नहीं है. इसके लिए हम इन दोनों सेट्स डेटा सेट्स को कंबाइन और मर्ज करना चाह रहे हैं. तो जो हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसको कॉपी यहाँ नहीं कर सकते. फॉर दैट मैटर वी नीड टू मर्ज दीज फाइल्स. सो टू डू सो वी हैव here we'll go to data, combine data sets, merge two data sets. We'll go here, we have type of merge. This is we have one to one, many to one, one to many. So we'll come to that further them later, but अभी के लिए हम क्या करेंगे, one to one. So we'll select the key variable. हमारे पास यहाँ पे अभी सिर्फ 3 key variables हैं. Make is the only variable that we wanted to key a save. So we'll select make. उसके बाद हम जाएंगे browse, and then we'll select the file that we want to merge. Here we have the file, and we'll select the file that we want to merge with this file. We'll select data one merge. Okay. As you could see here that we have all the file match. We've got make, weight, length. We have all the variables. Earlier we had 3 variables in different sets. We have make the same make as the same variables in both the files. Now we have it in one file. We'll click on save, and this file is saved. I already have this saved on my dataset, so I'll select no. अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि आपने उसमें देखा था, वन टू मैनी और मैनी टू वन. सो दीज आर बोथ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. पे हम सबसे पहले जब जाएंगे, हम वन टू मैनी और मैनी टू वन, तो हम सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट करेंगे. हमारे पास एक डेटा फाइल मौजूद है यहाँ पे वन. We have this data set. ये हमारा डेटा सेट है जिसमें आईडी, कंट्री, ओपन, लॉ. अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 ओपन पे जब भी हम जाएंगे, वन जहां भी हमारे पास उस फाइल में लिखा होगा, तो उसकी जगह जहां जहां कोरस्पॉन्डिंग में ओपन या लॉ लिखा होगा, वहां सेम वैल्यूज आ जाएंगी. So we want to merge this with another file. So we'll minimize this, and we'll go to data. We'll go to combine data sets, merge two data sets, and now we'll select one to many. ID country is the key variable that we wanted to keep same. And here we'll go on the browse data. We'll select one to many. Okay. This is the result that you could see over here on the screen. I'll show you the data set. यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 इज लाइक हमारे पास 118 था. ओपन पे 101 की वैल्यू, जब हम जाएंगे तो 118, लॉ इज 5. सो जहां जहां हमारे पास 1 मौजूद है, ओपन में if you see there is 118, 118, 118, and we'll go to 274, and we'll go to law 5. Wherever we have 1, we'll have open, we'll have the value of open in 118 and the value of law as 105. So this is what we do when we want to merge the files on the Stata. Thank you, everyone.